Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve sixth problem of final account from Intermediate First Year Accountancy. It is telling that prepare profit and loss account from the following particulars. So immediately after reading this, we'll draw the format that will be profit and loss account of M/S. इसको हम कैसा पढ़ेंगे? MESS. And why we are writing dash here? Because in the question no information is provided. ठीक है, बिजनेस का नाम नहीं है इसीलिए हम डैश लिखें इंस्टेड ऑफ नेम. डेट भी मेंशन नहीं है इसीलिए हम इधर फॉर द ईयर एंडिंग डैश, बट हेडिंग इज मैंडेटरी. एंड इफ यू आर मेकिंग एन अकाउंट then it is our duty to write DR and CR on both the sides. So what will be the first item of profit and loss account? That is gross profit. क्वेश्चन में देखो gross profit किधर है? That is 12,800. So profit का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता. What we'll do? We'll directly move towards the credit side of profit and loss account and we will write my gross profit brought down. That is 12,800. Then after that, let us search for all the non-trading incomes. हर वो इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड आती जो ट्रेडिंग से कनेक्टेड नहीं है, मतलब गुड्स की इनकम नहीं होती और फैक्ट्री की इनकम नहीं है, नॉन ट्रेडिंग इनकम्स. सो रेंट एंड टैक्सेस एक्सपेंडिचर है, सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंडिचर है, पोस्टेज इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर, बैड डेट्स ये लॉस है हमारे लिए, डिप्रिसिएशन इज ऑल्सो लॉस, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स को डिप्रिसिएशन बोलते हैं, और बैड डेट्स मतलब हम उधार पे कस्टमर्स को बेचे थे मगर पैसे हमारे डूब गए तो हमारे बिजनेस के लिए लॉस हुआ. दैट इज कंसिडर्ड एज बैड डेट्स. कैरेज ऑन सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट लिख लिया हम. डिस्काउंट पेड इज डिस्काउंट अलाउड, ये लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. डिस्काउंट रिसीव्ड इज अवर इनकम. सो व्हाट विल डू? डायरेक्टली विल मूव टुवर्ड्स द क्रेडिट साइड एंड विल राइट बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, दैट इज 2,900. right? Then after that interest received, this is also income. Receive मिल रहा ना हमको, ये income है. So what we'll do? We'll move towards the credit side of profit and loss account and we'll write by interest received, that is 1,600. The next item is trade expenses. अब trade expenses को profit and loss account में लेने के लिए condition है. What is that condition? अगर question में जनरल एक्सपेंसेस मेंशन नहीं है तो ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता. तो जनरल एक्सपेंसेस है क्या? देखो कहीं पे भी जनरल एक्सपेंसेस नहीं है, तो वी हैव टू कंसीडर ट्रेड एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देन आफ्टर दैट रिपेयर्स, दिस आवर एक्सपेंडिचर. लीगल एक्सपेंसेस ये भी एक्सपेंडिचर है. ऑडिट चार्जेस, ऑडिट चार्जेस इज ऑल्सो अवर एक्सपेंडिचर. ये है क्या? ऑडिट चार्जेस हम ऑडिटर को पे करते हैं. कहीं के लिए? द ऑडिटर विल वेरीफाई आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, उसके लिए हम फीस देते हैं उसको, दैट इज ऑडिट फीस और ऑडिट चार्जेस. नाउ वी आर डन विद द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नाउ डायरेक्टली विल मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड. और डेबिट साइड पहला आइटम आता सैलरीज, बट व्हेन यू ऑब्जर्व केयरफुली सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है एंड वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है. सो व्हाट वी नीड टू डू? वी नीड टू कंसीडर द फर्स्ट वर्ड. पहला वर्ड क्या दिख रहा? सैलरीज. तो हम पूरा सैलरीज कंसीडर करेंगे इसको, that is rupees 1,000. So directly we will move towards the debit side of profit and loss account and we will write by to salaries and wages, that is 850. Then after that we'll write all the expenses from the beginning. Rent and taxes, so move towards the debit side and write rent and taxes, that is 1,000. Then after that the next expenditure is postage, that is rupees. Postage will write on the debit side. 1,175 is the amount of postage. Then after that traveling expenses 800. So what we have to do? This is our expenditure. We'll move towards the debit side of profit and loss account and write traveling expenses rupees 800. Then after that the next expenditure, the next loss is bad debts. Bad debts हमारे लिए नुकसान है. हर नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा. विल मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड एंड राइट बैड डेट्स, दैट इज रुपीज 500. अनदर लॉस इज डेप्रिसिएशन. व्हाट इज डेप्रिसिएशन? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट. हमारे एसेट की वैल्यू अगर कम हो जा रही तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे. ठीक है,
सो रिडक्शन इन द वैल्यू, हमारे एसेट की वैल्यू कम हो रही तो हमारे लिए ये लॉस है. सो लॉस वी नीड टू रिकॉर्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, दैट इज डेप्रिसिएशन 700. एंड आफ्टर दैट the next expenditure is carriage on sales. Always remember, goods बिजनेस में आते टाइम जो खर्चा हो रहा वो ट्रेडिंग अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते. ठीक है, गुड्स बिजनेस से जब जाते, ठीक है, अगर जाते टाइम गुड्स अगर खर्चा हुआ तो दैट मस्ट बी टेकन ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. सो सेल्स मतलब गुड्स हमारे बिजनेस में से जा रहे हैं. Carriage on sales. So what we will do, directly we'll move towards the debit side of profit and loss account and we'll write carriage on sales. And after that, the next expenditure is discount paid rupees 300. ये आप पे कर रहे हैं. So that is discount allowed. What we have to do, we'll move towards the debit side of profit and loss account and we will write discount allow, discount paid 300. And after that, trade expenses 350. So this is non trading income. अभी हमारा डिस्कशन क्या हुआ ट्रेड एक्सपेंसेस को लेके. देयर इज अ कंडीशन, शर्त है ट्रेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए. व्हाट इज दैट कंडीशन? इफ जर्नल एक्सपेंसेस इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, देन ओनली वी नीड टू राइट ट्रेड एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगर जर्नल एक्सपेंसेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करना है. बट इन आवर क्वेश्चन देयर इज नो जर्नल एक्सपेंसेस. सो what we will do, we'll move towards the debit side of profit and loss account and we will write trade expenses, that is rupees 350. Then after that, the next item is repairs 300. This is our expenditure. So we'll move towards the debit side of profit and loss account and we'll write to repairs 300. Then after that, the next item is legal charges 950. What we need to do, we need to move towards the debit side. लीगल चार्जेस है क्या? लीगल चार्जेस आप गवर्नमेंट को पे करते हैं. दिस इज नॉन ट्रेडिंग इनकम. ठीक है, सॉरी नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर. सो इफ इट इज एक्सपेंडिचर देन we need to move towards the debit side of profit and loss account and we'll write legal charges, that is 950. The last item is audit charges. What we'll do, we'll move towards the debit side of profit and loss account and we'll write to audit charges rupees 375. So what is audit charges? हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, वी नीड टू वेरीफाई दोज बुक्स. और वेरिफिकेशन सिर्फ चार्टर अकाउंटेंट या ऑडिटर कर सकता. सो फॉर वेरिफिकेशन वी आर पेइंग सम फीस दैट मस्ट बी कंसिडर as the expenditure of the business. So we are writing audit charges on the debit side of profit and loss account. Now everything is done. Ultimately we need to find out a net profit. Net profit find out करने के लिए we need to do total. So we need to do total of both the sides. Debit side का total करो पहले, फिर credit side का total करो. Then observe both the totals very carefully. जो टोटल ज्यादा है उसको दोनों तरफ लिखना है आपको. सो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है हमारे सिनेरियो में, दैट इज 17,300 एंड वी विल राइट दिस 17,300 ऑन द डेबिट साइड आल्सो. लिख डालें. एंड फ्रॉम दिस 17,300 वी नीड टू सबट्रैक्ट द टोटल ऑफ डेबिट साइड. ये पूरे डेबिट साइड जितने भी फिगर्स दिख रहे हैं आपको, इसका टोटल करो. सो आफ्टर सबट्रैक्टिंग द टोटल we will get, after subtracting the total we will get net profit and that net profit should be transferred to capital account. So what is the net profit? That is 9,500 and this must be transferred to profit and loss account. So we have completed the 6th problem of final account. In the next video we are going to solve 7th problem. Till then, stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.